इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे प्रोफेसर अमर बहादुर शुक्ला सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रोफेसर SNP सिंह सर का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एवं उपस्थित तमाम प्रतिभागियों एवं अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, डॉक्टर रजनीकांत पांडे सर, आपके परमिशन से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट करते हुए। और डॉक्टर SNP सिंह सर, देवेंद्र सर, प्रभात जी, आप सबने ये हमको मौका दिया कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। और डॉक्टर रजनीकांत पांडे चेयरपर्सन इस नेशनल वेबिनार के, और डॉक्टर आशुतोष जी के बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। Mr. Mishra has completed his post-graduation in MSc degree from Advanced Center of Study, Department of Zoology, Banaras Hindu University, and his specialization area is molecular biology and biochemistry. His research area is interest are molecular biology, biochemistry, ecology, limnology, toxicology, genetics, and emerging new concept in field of life sciences. So, sir, this is very new concept for people like us who are studying and teaching in humanities subject, in social science subject, and we are sure we will be benefited from his lecture, sir. And a brief introduction about Dr. Rajnikant Pandey, sir. He is an assistant professor in RDS College, Muzaffarpur, sir. He has completed his post-graduation from BHU, MPhil and PhD. And one thing I would like to mention, he has completed his all degree from graduation to PhD from Banaras Hindu University, sir. It is privilege, sir. We have you here in this national webinar, sir. And along with you, sir, we have many participants from different departments of science, social science, humanities. We have our research scholars in this national webinar. We would like to welcome you, sir, again. And this is now I would like to request today's speaker, Mr. Ashutosh Mishra, sir. Please, this floor is yours, sir. Kindly enlighten us with this very special topic, Alzheimer disease, because we don't have any knowledge about this subject, and we would like to listen you, sir. Mr. Mishra, sir. His mic is off. Mr. Ashutosh Mishra, sir. Sir, am I audible? Yes. Thank you, sir. Thank you, Dr. Amar Bahadur Shukla, sir, for your introduction. I would like to share my pleasure to be here as a resource person on the topic Alzheimer disease. I am thankful to Prabhat ji for calling and providing me and giving an opportunity to speak on this topic on the platform of Prayatna. So I would like, am I audible? Hello. Yes, sir. You are very much. Okay, thank you. So let me share my PPT. Okay. So it is visible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you. So as we already familiar with this topic, Alzheimer's disease, and this term Alzheimer was termed after Dr. Elvar Alzheimer, who discovered brain changes in women who died
who died due to that brain changes and mental illness. So this disease is happens in old people, and it hampers the brain function. Once considered a rare disease, Alzheimer's disease is now seen as a major public health problem that is seriously affecting millions of older people and their family. And it is caused by damage to nerve cells in the brain. Okay, so brain brain is important organ, and it is made up of neuron या nerve cells, and this disease, Alzheimer disease, damage nerve cells, and it occurs in generally occurs in old people. So this disease is a progressive disease because it slowly progresses, and we see that the brain damages with age, and the person feels memory loss and thinking skills, and it is irreversible. So it cannot be reversible again. Although the risk of developing Alzheimer's disease increases with age, in most people with AD, symptoms first appear after age 60. So, ये जो डिसीज है ये 60 ओल्ड पीपल में होता है और 60 अराउंड दैट टाइम उस समय होता है, लेकिन उसका जो ऑनसेट है वो पहले से ही क्या होता है, शुरू हो जाता है. So it is and it is different from normal aging. जो normal aging होती है ओल्ड होने पे सारी चीजें जो है क्या होती हैं कि धीरे धीरे उनमें उनके जो फंक्शन हैं जो वो स्लो होने लगते हैं, लेकिन that is different from normal aging. And what are the symptoms of Alzheimer disease? So इसमें सबसे important जो symptom है, we see that कि the people's start forgetfulness, उनको फिर भूलने की आदत होने लगती है, and the loss of short-term memory, concentration on past, loss of time, communication diminishes, delusions. So these are the some important changes, important symptoms of Alzheimer disease. Okay, and Alzheimer disease accounts 60 to 80% of dementia. So dementia is a collective term for a group of neurocognitive disorders characterized by a decline in cognitive functions such as memory, language, recognizing, reasoning, and planning. It is a group of symptoms that characterizes a condition. Okay, it is chronic because it continues for a long time, and it progresses with age, and as symptoms keep getting worse. It affects the older people with dementia, have problem of memory, and they are affected in thinking and behavior. And symptoms happens because of illness that affect the brain, continues for a long time and progressive as the symptom keep getting worse. Okay, तो जैसे ही क्या है, it progresses with age. Dementia, जो ये term है, it is an umbrella term used to describe a range of symptoms associated with cognitive impairment. So and एक कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट डिमेंशिया में होता है, 60 to 80% इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू एल्जाइमर्स. ठीक है, और जो डिमेंशिया है जिसमें वैस्कुलर रीजन्स हैं, जिसमें कि क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई है वो ब्रेन तक नहीं हो पाती है.
तो उससे ब्रेन का जो एरिया है वो क्या होता है, डैमेज होने लगता है. तो दैट इज वैस्कुलर रीजन. लेवी बॉडीज, ये भी क्या है, एक तरह की प्रोटीन्स है जो कि आपके ब्रेन में वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं और उसकी वजह से क्या होते हैं, न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं. इन द सेम थिंग इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया. तो इसमें 60 to 80% जो डिमेंशिया है दैट इज ड्यू टू एल्जाइमर डिसीज. ओके, now will dementia be a major health problem in future? So this question arises that will dementia be a major health problem in future? If we see this bar diagram, we see that कि जैसे जैसे peoples की क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और जो ओल्डर पीपल हैं उनकी संख्या क्या है पॉपुलेशन में वो बढ़ रही है. So if you see the percentage of older people in 2015, it is 8.29%. 8.9% is proportion. But if we project 250, then it will be 19.4%. So impact of dementia will increase as India ages. Number of aged persons will increase from 8.9% of population in 2015 to 19.5% by 2050. Yes. So question is that it will possibly a major health issue in future. And how many around us have dementia? So we see this graph, and this shows the prevalence of dementia, percentage of prevalence of dementia. So as age increases from 60 to 90, we see that there is an increase in percentage of prevalence. As per survey whose results were published in 2015, there were 1 lakh elders above the age of 60 years having dementia. This means 3.7% of people above 60 years are suffering from dementia. 1 in every 16 households with an elder has someone with dementia. So older persons have higher chance of dementia. Dementia prevalence doubles for every 6.6 years increase in age. In 90 plus age group, it is 44.1% dementia. So the people, the group of people who are of 90 plus age, उनमें जो dementia के chances हैं वो 44% तक बढ़ जाते हैं. Why dementia is going to be an important disease of the future? Only 1 in 10 people with dementia are clinically diagnosed in India. Dementia prevalence doubles for every 6.6 years of age. Dementia is a progressive symptom. Initial symptoms are mild and the person become dependent as the symptom progresses. So, and there is no cure for dementia. तो अभी क्या है कि we are managing the symptoms, but still there is not a permanent cure for this syndrome or this disease. Okay, with proper care, life expectancy of people with dementia can be extended from few months to few years. So this shows the distribution of dementia cases in different states, and projected growth in dementia we can see that. And here we see that the Bihar and the Jharkhand, and these 2 states are at higher rates. Because the increase in dementia can be seen in regions with higher population and lesser awareness. So awareness is important in this context. Now, Alzheimer's and Related Disorders Society of India, ARDSI, initiated awareness program in 1992. Dementia remains a largely hidden problem in India, especially those parts of India where poverty and literacy levels are high. So before discussing the cause of Alzheimer's disease, I would like to discuss some
some a little bit about brain. Human brain is about 1.5 kg, and it is of a medium cauliflower size. And if you see the number of neurons, which are the units of brain, there are 100 billion neurons are there, and neurons are connected with each other, and these connections are 100 trillion in human brain. And in this diagram, we can here we can see the different parts of the brain. Here is this is the main part, that is cerebrum, and this is main part which is responsible for thinking and memory, and control and balance के लिए जो आपका जो part है, that is the cerebellum. This is the part, and this is the part that is known as brain stem. So all these three parts coordinate different functions in brain. And this slide shows the unit of brain, that is the neuron. And if you see in the brain, there are basically two types of cells, neuronal cells and glial cells. Neuronal cells are higher in number, and the neuron is responsible for sending and receiving nerve impulses or signals, and glial cells are non-neuronal cells that provide support and nutrition, maintain homeostasis, form myelin, and facilitate signal transmission in the nervous system. So this is the structure of a single neuron, and here we can we see that this is the cell, and this is the projected arm, and this is known as axon. Axon is considered as the part of the neuron that takes the neuronal impulse from cell body to other neuron. Okay, inside human brains, we see that here is the we can see the different neurons, and they are connected with each other, and the connections are known as synapses. Between the synapses, there is a chemical transmission of there are molecules which transmit. They are known as neurotransmitter molecules, and here the one neuron is connected with another neuron. So ईडी जो एल्जाइमर डिसीज है, ये जो कनेक्शंस हैं इसको डिसरप्ट करता है, और जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को क्या करता है, डैमेज करता है. सो okay, so let us see the different parts of the brain. This picture shows about different parts of the brain, and that is the cerebrum. That is the this is the main part, and where sensory information received from the outside world is processed. This part of the brain controls voluntary movement and regulates conscious thought and mental activity. It accounts for 85% of brain space. My mouse है क्या? Mouse नहीं बढ़ेगा तो mouse इस पे So this region is cerebrum, and this is accounts for 85% of brain's weight, and it is divided into two parts, left and right hemisphere, that is known as cerebral hemisphere. And the whole cerebrum is covered by an layer that is known as cerebral cortex. So it is also important for thinking and other analysis. Cerebellum. This part is cerebellum. This part is cerebellum. And cerebellum is in charge of balance and coordination, and it takes up about 10% of the brain.
and consists of two hemispheres also, receives information from eyes, ears, and muscles and joints about body's movement and position. This is the third component of the brain, that is brain stem, and it connects the spinal cord and the brain. It releases and receives messages to and from muscles, skin, and other organs, and control automatic functions such as heart rate, blood pressure, and breathing. So these three are important parts of the brain which coordinate all the functions and control all the functions of body. So the part which is affected, the brain का वह part जो affected होता है या damage होता है, तो according to that part the function is affected. So now we will see the stages of Alzheimer's disease. So in early stage, there are we can categorize in three stages: early, middle, and late. In early stage of Alzheimer, people's needs reminders, so they start forgetting. Daily routines becomes difficult. Concentration is difficult. So this is the early symptoms. In middle stage of Alzheimer's disease, they get lost easily, and the changes in personality may need hands-on care. And in the late stage of Alzheimer's disease, the person has severe confusion, needs hand-on care for most personal care, may not recognize self or family. So here, the person is not able to recognize other person and self also. Okay. So early stage of Alzheimer's disease, this is also known as preclinical Alzheimer's disease. इसमें इस समय क्या होता है कि सिम्टम्स व्यक्ति को पता नहीं लगता है, और person does not know what is happening with his brain. Signs of AD are first noticed in the entorhinal cortex. So brain का यह जो हिस्सा है, ये जो है, this is affected first, and then proceed to hippocampus. Hippocampus is this area of the brain, and it is related with memory. So affected region begins to shrink as nerve cells die. So ये जो पार्ट है, ये क्या करने लगते हैं, ये डैमेज होने लगते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन क्या करता है, श्रिंक होने लगता है. And the changes can begin 10 to 20 years before symptoms appear. तो symptoms की appear होने से पहले क्या है, 10 to 20 years पहले ये changes शुरू हो जाते हैं, and that is happening in the brain. And memory loss is the first sign of AD. So the preclinical in early stage, yeah, we say preclinical Alzheimer's disease. In that stage, memory loss is the first sign of AD. Okay, in middle stage, here जो damage है वो आपका moderate or mild हो जाता है. AD spreads through the brain. The cerebral cortex begins to shrink as more and more neurons stop working and die. So more and more neurons started working, and mild AD signs can include memory loss, confusion, trouble handling money, poor judgment, mood changes, and increased anxiety. Moderate Alzheimer's disease signs can include increased memory loss and confusion, problems recognizing people, difficulty with language and thoughts, restlessness, agitation, wandering, and repetitive statements. So this area we can see here. This area, this is the cerebral cortex of the brain. They started damaging. So ये जो part है, ये damage होना शुरू हो जाता है, और
इस प्री क्लिनिकल जो आपका जो स्टेज है, अर्ली स्टेज है, उसमें जो एंटोरिनल पार्ट है और हिपोकैम्पस, ये दोनों एरिया क्या है वो डैमेज होते हैं. तो now in the late stage or severe Alzheimer disease, what we see in severe AD, extreme shrinkage occurs in the brain. So brain क्या है उसमें, brain पूरा का पूरा क्या है, it has shrinked, and patients are completely dependent on others for care. Symptoms can include weight loss, seizures, skin infections, groaning, moaning or grunting, increased sleeping, loss of bladder and bowel control. This is also we can say that कि brains का जो control है वो क्या है, वो कम हो जाता है या एकदम ही वो it is not happening there. Death usually occurs from aspiration pneumonia or other infection. Caregivers can turn to a hospice for help and palliative care. So here the brain is damaged severely due to Alzheimer disease. Now we can see here these are the here it is a healthy brain, and this is the mild or Alzheimer disease where sinking has started, and this is late Alzheimer disease, a severe Alzheimer disease stage in which shrinkage has इसमें क्या है कि जो brain है that is completely shrink. So what areas of the brain are affected in Alzheimer? So we can see there are it affects cognition, it affects behavior, it affects emotions. So all these three functions are affected, which are important functions of the brain. In case cognition means memory, learning, language, abstract thinking, psychomotor speed. So all these cognition activities are affected. Behavior, if you see the behavior, communication, safety, personal cares, hallucinations, persons started feeling hallucinations, delusions, उसको भ्रम होने लगता है. So behavioral changes आने लगते हैं. Emotions में the emotion is dysregulated, disorganized, apathy, the loss of energy, willingness, liability, moods change होता है. So these things are affected. Okay, now we can see these two diagrams, photograph, and this is these photographs are PET scan, emission topography, scan of normal brain, and scan of Alzheimer disease brain. So this red color shows the activity of the brain. So here we can see the activity in the normal brain. It is more active. Here in the Alzheimer disease, it is very less active. So, but why it happens? What is the cause of AD? No one knows what caused AD to begin, but we do know a lot about what happens in the brain once AD takes hold. So, Alzheimer disease कैसे शुरू होती है? What is the basic cause या root cause of Alzheimer disease? It is still unknown, but how it affects the brain, it has been elaborated, or we can say we know that, but इसका main कारण क्या है? Why it is happening? Why it is happening in the brain? It is still not known. So here we see the different grades, and we can see the shrinkage of the brain atrophy, visual standards, and we can also correlate the stage of the Alzheimer disease by this shrinkage. So in severe Alzheimer disease, what we see that the shrinkage is more, and और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कैविटीज हैं, वे एनलार्ज हो जाती हैं.
So this is the cross section of brain, and here is the cross section of normal brain, and it is the Alzheimer's brain. And here we see that the इसमें ब्रेन के अंदर कैविटीज पाई जाती हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स. तो दीज कैविटी गेट enlarged, और ब्रेन्स की जो ऊपर आपको जो हम एक ग्रुप्स और बल्ज देखते हैं, दैट इज नोन एज, उसको सल्कस और गायरस कहते हैं. तो सल्कस और गायरस इंक्रीज हो जाता है ब्रेन में. So here it is a normal brain, there is a little उनके बीच में स्पेस कम है, लेकिन here it is space is more in case of Alzheimer disease. Okay, so what has been reported that the Alzheimer disease, in case of Alzheimer disease, plaques and tangles are the hallmarks of AD. So brains of people with AD have an abundance of two abnormal structures, and this has been analyzed by autopsy of the brain of a person suffering from Alzheimer disease. Autopsy means जो पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम में brain का जो है, we take cross section of the brain and we see the changes in the brain. So what we have seen that the brains of people with AD have an abundance of two abnormal structures, and these are known as plaques and tangles. तो ये दो तरह की चीजें, abnormal चीजें हमको ब्रेन में दिखाई देती हैं, और these are beta amyloid plaques, which are dense deposits of protein and cellular material that accumulate outside and around nerve cells. And neurofibrillary tangles. तो ये जो tangles हैं, here this is tangle and this is plaque. तो ये plaque ये जो है ये nerves neuron cell के बाहर बनता है, और ये tangle जो है it is formed inside the neuronal cell, and both of these structures, they disrupt the function of the neuron, and they led to Alzheimer disease. So here we see that how the plaque is formed. So there is a protein that is known as amyloid precursor protein, which is associated with the plasma membrane of the neuronal cell. So here it is the plasma membrane, and this is the protein. This is known as amyloid precursor protein, APP. So there is an enzyme which cuts this protein from this membrane, and APP sticks through the neuron membrane. Enzymes cut the APP into fragments of protein, including beta amyloid. So these beta amyloid fragments come together in clumps to form plaques. So here we see that this is the intact APP, and after when enzyme cut this protein from neuronal cell, it gets separated, and then it start aggregating, forming a plaque that is known as beta amyloid plaque. So this plaque starts hampering the functions of the normal neuronal cell. So, and there is another thing that is the neurofibrillary tangle, जो कि ये आपका नर्व सेल के अंदर बनता है. एवरी सेल, सभी जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है. जैसे कि हमारे अंदर स्केलेटल बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं, तो इन द सिमिलर वे cells are having skeletal structures, and they are known as cytoskeleton, and one of cytoskeleton is microtubule. तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं, माइक्रोट्यूब्यूल आर स्टेबलाइज्ड बाय अ प्रोटीन दैट इज नोन एज टाउ प्रोटीन, और ये टाउ प्रोटीन है दैट इन केस ऑफ Alzheimer disease, this tau protein is not normal, and due to that this microtubules are not stable, and tau proteins aggregate and they form a clump and forming neurofibrillary tangles. So two things are important.
beta amyloid plaques and neurofibrillary tangles, which damage brain and lead to person to suffer from Alzheimer's disease. Okay, this is the mechanism. Alzheimer's disease consists of two main features, and this is a beta amyloid. This is also known as senile plaques, इसको senile plaques भी कहते हैं, और neurofibrillary tangles, and this is the hyperphosphorylated tau, primary culprit in cell death. Mechanism, if you see the beta amyloid, this will hyperphosphorylate tau protein, and tau spreads throughout the brain from neuron to neuron, and it leads to cell death. So these two beta amyloid plaque and formation of neurofibrillary tangle lead to damage of neuronal cell. So still there is ongoing research on the cause of Alzheimer's disease. It has been seen that it may be genetic, from a family से भी हो सकता है, and there are many factors which are responsible for Alzheimer's disease. Genetic, lifestyle, and environmental factors work together to cause the disease process to start. In recent years, scientists have discovered genetic links to AD, and they are also investigating other factors that may play a role in causing Alzheimer's disease. Now, if we see the genetic aspect of Alzheimer's disease, there are some genes which are responsible for this disease. जैसे कि हम देखते हैं कि जो अल्जाइमर डिसीज है ये ओल्ड पीपल में कॉमन है, लेकिन इन सम टाइम्स दैट इज नोन एज अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिसीज, दैट इज अ रेयर, यूजुअली अफेक्टिंग पीपल एज्ड 30 to 60. तो 30 से और 60 के बीच में जो persons हैं, they are also affected, and this runs in families. So this is the genetic. Then due to transmission of genes from mother and father, this disease run in family. So some genes has been identified, and this is the one gene that is ApoE. So recent works has shown the ApoE4 allele lowers the age of onset of the disease compared to those without an E4 allele who develop AD. तो जिनमें ये जो जीन है, which is this gene is, if this gene is present, the person is not is susceptible. But if it is mutated or absent, then the person will be prone to Alzheimer's disease. And studies at the cellular and molecular level, what we see, oxidative damage from the free radical molecules can injure neurons. Homocysteine, an amino acid, is a risk factor for heart disease, and a study shows that an elevated level of homocysteine is associated with the increased risk of AD. So scientists are also looking at inflammation in certain regions of the brain and strokes as a risk factor of Alzheimer's disease. So sometimes other factors induce to develop or onset of Alzheimer's disease. So scientists examine characteristics, lifestyles, and disease rates of group of peoples to gather clues about possible cause of Alzheimer's disease. Research conduct yearly exams of physical and mental status, work on different groups, and studies of donated brains at autopsy. Some early results indicate that the persons which are active mentally stimulating activity protects the brain in some ways. In early life, higher skills in grammar and density of ideas are associated with the protection against AD in late life. So it is necessary to be active
mentally. So how this disease is diagnosed? So we take detailed patient history, information from family and friends, physical and neurological exams and lab tests, neuropsychological test, and there are imaging tools which are CT scan, uh, computer tomography, magnetic resonance imaging, that is MRI, positron emission topography. So these scans are used primarily for research purposes. So generally for diagnosis, we use the CT and MRI. So this is a multidisciplinary approach for diagnosis of Alzheimer's disease, and the brain scan, blood, urine test, hearing and visual exams, and neuropsychological testing and interview with caregivers. So that is important for diagnosis. So these are the we can also take histological analysis. Devastating losses of synapses and neurons and dense spherical structures like senile plaques prevalent outside the neurons of the hippocampus and other regions of the brain, and aggregation of fibrils, neurofibrillary tangles, NFT, accumulate within the cell bodies. So we can see in histological analysis. So what we can do, because this disease is not having any proper treatment, so we can manage the symptoms. Between 70 to 90% of people with AD eventually develop behavioral symptoms, including sleeplessness, wandering and pacing, aggression, agitation, anger, depression, and hallucination and delusions. So experts suggest that these general coping strategies for managing difficult behaviors. So what we can do is stay calm and be understanding. Be patient and flexible. Do not argue or try to convince. Acknowledge requests and respond to them. Try not to take behaviors personally. Remember, it is the disease talking and not your loved one. So experts encourage caregivers to try non-medical coping strategies first. However, medical treatment is often available if the behavior has become too difficult to handle. Okay. So some drugs are also available, but they do not treat. They only manage the symptom. Like for if Alzheimer is detected in early stage, these drugs, Cognax, Aricept, Exelon, so these can be used and it manages the symptom. Medicine used to control symptoms allow caregivers to provide easier care. Now, I have also included how Ayurveda can be used for Alzheimer's disease. In Ayurveda, such condition is known as Vat Vyadhi. It is due to imbalance of Vat. So Ayurveda में जो है तीन सिम्टम तीन चीजें हैं, तो उसमें जो वात है, वात का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. So the Samprapti pathophysiology of Alzheimer's disease, vacillation of Vat in the tissues of body and the brain causes it to gradually move in the stage of imbalance. So researchers at Newcastle University have found that ashwagandha inhibits the formation of beta amyloid plaques. So this can there are अभी studies के ऊपर ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन these are Indian herbs which are used for this type of diseases. Ginkgo biloba, हल्दी जो है, हल्दी हमारे जो कि किचन में और बहुत सारे चीज़ों में यूज़ की जाती है, रिसाइप्स में यूज़ की जाती है. So it has been seen that it is anti-inflammatory and it also protects the brain.
और इंडिया में इंडिया में पाया गया है कि जो एल्जाइमर डिसीज है, इसका जो ग्रोथ रेट है, इट इज 4 times लेसर देन द वेस्टर्न कंट्रीज. तो 4 times lesser. That is due to some we our traditional herbs which are used in our kitchen. So and Brahmi, Sankushpi, Vach, they are herbs that protects the brain. And this is support for caregivers. So who can support the persons which are suffering from Alzheimer disease? So the spouses, daughters, grandchildren, daughter-in-law, so sons, brothers and sisters, and friends, neighbors, members of the faith community and the society can help to these peoples to come back with this Alzheimer disease. So thank you for listening me patiently. Thank you so much, sir. You have given very detailed presentation, very extensive and very insightful presentation, sir. And definitely, we are going to benefit. We are going to get benefit from this presentation, sir. And you have described what is this disease and what are the causes of this disease, how we can cure from this disease. So you have given very detailed presentation, sir. And now I would like to request our chairperson, Dr. Rajnikant Pandey, sir, kindly give your remarks on this topic and this presentation. We are here to listen you, sir. Dr. Rajnikant Pandey, sir. Uh, thank you, Dr. Amar Shukla, sir, for providing me the opportunity to, discuss further what the Dr. Misra said here. First of all, जहाँ तक मैंने सुना सर को, तो this is a very research-based presentation. So we expect that this will be the get in a published form. So big congratulations to Dr. Misra for the, analyzing and presenting such kind of topic that is a purely research based and such a manner the non-science background individuals like us can understand what is the Alzheimer disease and how this is emerges and how it impacts the human being and what is the caregiver's responsibility and how it is handled. So start with the his expression, his opinion regarding the Alzheimer disease. First of all, how it is rare to measure transition. That means कि पहले कैसे यह एक रेयर डिजीज है और कैसे बाद में कॉमन होता जा रहा है. The second thing is it is targeting the old people, mainly 60 and the above. And the most important thing, the lacuna of recognition of the symptoms of the Alzheimer disease. Lacuna, that means we are uh, part and parcel of these things. Oh, that man is going to miss something. बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एक डिजीज हो सकता है. हमने कई बार अपने घरों में देखा कि हमारे बड़ों से कोई चीज होती है जो वो भूल जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है कि ओ दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज सिम्टम ऑफ द डिजीज. And that disease, that means individual is lost their own identity. Even taking food and is not in memory, he is taken her meal. So this is the important thing. And the most important, the Alzheimer disease is, socio and psychological matrix is available. Socio-psychometrics, that means a human being who is facing and who is suffering for the Alzheimer, but he is not in position to care themselves. So others are caring for that person. So if others are caring, so what kind of social transformation in our society? And the second thing is the demographic deficit.
For example, there are so many countries in the world. For example, Japan, the older population is in the majority. So in a country where older people are in majority, then how they are going to take care and who will take care? The second thing is the lifestyle of individual is changing. The failure of joint families, the transition from joint family to the nuclear family in Indian society is also one of the alarming situation for such kind of disease. And most important, the sociological concept of aging is most prominent in such kind of disease. Aging is a process, is a phenomena that is occurred in everyone. So, if someone is suffering from Alzheimer, if he has not support any kind of the family member, so this is difficult for him. So, if we are going to compare the US society and the Indian society, then we find one, major difference. There are the old age homes are in the day-to-day life. Even the young people are going to registration for their future aging planning. After the 60, I will be here, and all kind of facilities are there for their care. But in Indian society, the man is thinking that okay, if I will retire, then my children are take care of myself. But nowadays, after the industrialization and globalization, the individuals are going to rural society to urban society. The distance of old and the young and the unavailability to coming as a regular phenomena to the house, the village. So this kind of socio-psychometrics is more prominent in this case. Alzheimer is obviously this is a basically dementia syndrome. So it is minimizing the capacity of brain to locate individual with the society. That means an individual is purely rupturing from the rest. And these are the basic, problematic situation. So the stages of early, middle, late, even sir is also talking about 1992 ARDSI. That is how Indians जो medical communities है वो इसको aware करना चाहती है. And thanks to the प्रयत्न to choosing such kind of topic, because Pratna is always working for the education, support, health, slums. So how to make awareness to individual. So this is not day-to-day phenomena. If someone losing their memory, if someone is managing the communication, that means this kind of the symptoms to locate there and find what kind of the situations. If someone suffering from Alzheimer, then he or she needs care from society. Also, one recommendation from the as a student of political science, there should be a public policy from the state sponsored or state initiative to such kind of disease. If someone has no family, then how they survive with the Alzheimer? This is the questioning, and this is the learning of such kind of lecture given by Dr. Asutosh Mishra. And for the perspective of Pratna, Dr. Mishra is from Mirzapur district of Uttar Pradesh, and Mirzapur is also, in the purview of the Pratna, as Prabhat ji talks about in the first stage of the this webinar. So over to Amar Bahadur Shukla sir. थैंक यू सो मच सर. आपने एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू, पॉलिटिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू किस तरीके से हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसको, और आजकल तो न्यू सोशल मूवमेंट्स जो चल रहे हैं उनके माध्यम से
जो है इस तरीके की डिजीज को हम और ज्यादा एक आंदोलन के रूप में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है आज के समय में। तो आपके जो रिमार्क्स हैं सर बेहतरीन हैं, इस विषय पे हमको सोचने के लिए और भी जो है इनपुट दिए, इसके लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आवर सेशन हम शुरू करें इसके पहले जो है हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में कुछ महत्वपूर्ण स्पीकर नहीं कहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हैं हम हमारे बीच, जिनसे हम जो है कुछ उनके रिमार्क्स लेना चाहेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहेंगे, जिसमें देवेंद्र सर दिख रहे हैं हमें, और एसएनपी सर जो है दिख नहीं रहे हैं, अगर वो होंगे तो उनसे भी हम लोग चाहेंगे कि उनके काइंड वर्ड्स इसमें आए। तो देवेंद्र सर, would you like to give your remarks on this topic, sir? धन्यवाद। रिमार्क्स तो नहीं, लेकिन कुछ जानना भी चाहेंगे। एज हमारा 70 है, तो मैं प्रभावित कुछ हूँ, तो उसी का क्लियरेंस हम चाहेंगे। तो वक्ता महोदय, असल वक्ता महोदय का नाम भी हम भूल गए, आशुतोष जी। आशुतोष जी। तो उन्होंने कुछ बात कहे। तो एक जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, तो क्या उनमें एंगर और ये लगे कि भाई हमको लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये भावना मन में क्या आने लगती है क्या? मैंने अपने बच्चों से लगता है कि मेरी बात नहीं सुन रहा है। यद्यपि बच्चे पर्याप्त रेस्पेक्ट दे रहे हैं, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, भूलना तो स्वाभाविक है। जैसे मैं अभी आशुतोष जी का नाम भूल गया, तो ऐसा तो खैर कॉमन चीज। लेकिन बात बात पर जब बुजुर्ग लोग नाराज होने लगते हैं या लगता है कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, तो ये भी डायमेंशिया का ये क्या है, एक सिम्टम है क्या? वैसे तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, अगर वो ज़्यादा अगर प्रभावित कर रहे हैं, दो माइक्रोफोन ऑन है आपके पास, तो एक एक बंद करके दूसरे से बात करें तो सुनाई देगा ठीक से जी। काइंडली अनम्यूट सर योरसेल्फ, वी कांट हियर यू सर। और उसी के साथ एक और थैंक क्वेश्चन, यू। क्या मानसिक व्यस्तता, अगर जितना कोई व्यस्त रहे, एजेड व्यक्ति और बहुत व्यस्त रहे, और मानसिक, शारीरिक तो संभव नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से अधिक व्यस्त रहे, तो क्या इस बीमारी का ग्रोथ नहीं होगा? मतलब उसका न्यूरॉन्स जो कम होता जा रहा है, ऐसा स्टॉप रुकेगा क्या? और एक लाइन और आपने कहा, व्याकरण, तो क्या जो बहुत किसी शब्दों पर गौर करता है, हर बातों पर गौर करता है, शुद्धता, वाक्य की शुद्धता पर भी ध्यान देता है, ये भी इसके लिए फायदेमंद होगा क्या? हाँ सर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि नहीं, ये फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, नई चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, तो इट विल श्योरली स्टिमुलेट ब्रेन, और इस तरह की जो डिसीजेज हैं ये होने की संभावना कम हो जाएगी। और इसका जो डिसीज जो एस्पेक्ट है वो जेनेटिक ज़्यादातर है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। देयर आर मेनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि आनुवंशिक हैं, और आपके जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो सभी मिलकर के इस डिसीज को उत्पन्न करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल थिंग है तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो देन वी कैन अंडरगो डायग्नोसिस, और वी कैन मीट न्यूरोलॉजिस्ट फॉर दैट पर्सपेक्टिव। और आपने हल्दी और अश्वगंधा का जी उल्लेख किया, ये फायदेमंद है। हाँ सर, तो हम लोग खाते ही हैं। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट अश्वगंधा जो है, वो जो बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स हैं, उनको बनने से थोड़ा अब कैसे करता है, बट इट हैज बीन रिसर्च दैट
ये रोकता है, it prevents the formation of beta amyloid plaques. So in this way we can protect our brain. हल्दी जो हमारे जो किचन में यूज की जाती है वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करके वी कैन प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। और देयर आर अदर हर्ब्स आल्सो, जैसे कि हम लोग आयुर्वेदा में है तो उसको लेकर के हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही समय पर ये सेमिनार हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छा तरह से सब बहुत ही माइन्यूटली समझाया तीनों व्यक्ति को। हमारे तरफ से हृदय से धन्यवाद। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे बीच प्रोफेसर SNP सिंह सर हैं, इस समय मौजूद हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। अगर हैं सर तो आप अपने आशीर्वचन दीजिए हम लोगों को, अपने व्यूज हमसे साझा कीजिए। प्रोफेसर सिंह सर, प्रोबेबली आई थिंक ही इज नॉट देयर। और हमारे जो भी इसमें प्रतिभागी सहभागी हैं इस नेशनल वेबिनार। जी 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 रजनी जी। शुक्ला सर, आई थिंक प्रवाल भट्टाचार्य इज देयर, तो आप उनसे भी ओपिनियन ले सकते हैं। ही इज आल्सो यू नो फ्रॉम द जियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्ट्स कॉलेज। Okay, okay. So, Dr. Bhattacharya, kindly give your remarks on this topic, sir, and kindly the microphone is yours, sir. Dr. Bhattacharya. Dr. Bhattacharya, are you there, sir? Can you hear me, sir? Yes. Preval Chatterjee, sorry, not Bhattacharya, Preval Chatterjee. Preval Chatterjee. Okay, okay, okay. Dr. Chatterjee, Dr. Chatterjee, microphone is yours, sir. Kindly give your remarks on this topic, sir. प्रभात चटर्जी नाम है, क्या नाम है सर का? डॉक्टर प्रवाल चटर्जी। प्रवाल चटर्जी जी जी। डॉक्टर चटर्जी सर, आर यू लिसनिंग? मुझे लगता है सर को हम लोगों की आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर प्रवाल चटर्जी सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, काइंडली गिव योर रिमार्क। मुझे लगता है नहीं सर। और हमारे जो भी प्रतिभागी इसमें है, और सर उसके साथ एक क्वेश्चन हमारा है इसमें सर आशुतोष जी, कि योग के माध्यम से जो मेडिटेशन है उसके माध्यम से जो है क्या इस डिजीज को कुछ कम किया जा सकता है, या खुद के ऊपर जो जैसे सर ने अभी कहा कि गुस्सा ना आए कंट्रोल से, तो योग के माध्यम से अगर हम अपने एंगर को कंट्रोल कर लें तो वो कुछ हेल्पफुल होगा सर इसमें कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि योग और प्राणायाम जो है ये हमारे जो है लाइफ के वी कैन से दैट कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। और ये हमारे शरीर में जो वी से दैट कि हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, स्ट्रेस जो है, और ये हमारा जो बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसको भी ये क्या है ठीक करते हैं। तो बहुत सारी जो है फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं सर। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सर। तो हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में जो भी और प्रतिभागी हैं अपनी कोई बात शेयर करना चाहें, अपने विचार हमसे साझा करना चाहें, इस विषय पर कोई प्रश्न अगर उनके हैं और सर से पूछना चाहें आज के स्पीकर से, तो कृपया आप लोग जो है पूछ सकते हैं एक एक करके। अदरवाइज हम चले जाएंगे फिर प्रभात जी के पास, अनुमति चाहेंगे चेयरपर्सन सर का कि फिर वो अनुमति देंगे प्रभात जी के पास। Some students have raised their hands, sir. Okay, I can't actually read the name in my mobile, so one by one you can ask your questions. Dear participants, kindly ask your question. Sir, this is Kumar Siddharth. Raise hand by Deepak. Yes, Siddharth. Please ask. सिद्धार्थ, हाँ कुमार सिद्धार्थ। सर, आशुतोष सर से मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई अल्जाइमर से व्यक्ति पीड़ित है और उसे मतलब सिम्टम दिख गया है और उसका क्योर कर रहा है, तो उसे कितने दिनों तक, मतलब डायग्नोसिस कर रहे हैं तो कितने दिनों तक वो
मतलब वो रह सकते हैं, हाउ लॉन्ग सर? देखिए, वो डिसीज की सेवरिटी पे डिपेंड करता है, वो किस स्टेज में डिटेक्ट हुआ है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो उसको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ है या माइल्ड स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो फिर क्या होता है कि फिर बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल, इसको फिर रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेट स्टेज में क्या है कि पर्सन we can say that we cannot stop that thing. So agar it has been seen that if it is detected before, so we can manage in well way. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। दीपक जी, आप अपना प्रश्न पूछें। दीपक जी, या हमारे दूसरे किसी प्रतिभागी के मन में कोई विचार हो तो प्लीज साझा कीजिए। हेलो सर, माय नेम इज अभय। यस अभय जी, प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर अल्जाइमर डिजीज जो है ये सर मतलब डिप्रेशन के भी शिकार ऐसे हो सकते हैं, डिप्रेशन की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है क्या? या फिर मतलब सर अर्लियर स्टेज में मतलब ना ये एज लगभग 25 या 30 वर्ष के आसपास ये डिजीज हो सकते हैं क्या? तो इसका कोई देखिए, डिप्रेशन इज द वन ऑफ सिम्टम ऑफ एल्जाइमर डिसीज, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसको एल्जाइमर हो सकता है। देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन अगर एल्जाइमर है तो दैट पर्सन मे बी डिप्रेस्ड। लेकिन जैसे कुछ जेनेटिक जो एल्जाइमर डिसीज है वो जो कि फैमिली में रन करती है, वहाँ पे वी सी दैट कि जो डिसीज है उसका ऑनसेट क्या होता है, वो जल्दी होता है। 30 के बाद जो है उसमें वो डिसीज शुरू हो जाती है। तो if that is genetic aspects are also there, तो I think a depression से इसका it is not really it will not affect occurrence of Alzheimer disease. थैंक यू अभय जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे और कोई साथी अपने प्रश्न पूछना चाहें, अपने विचार साझा करना चाहें तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड टीचर्स। सर माय नेम इज करुणा और मेरा सवाल ये है कि हम अर्ली स्टेज में मतलब व्हेन वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, तब हम डेली रूटीन में ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज रख सकते हैं, अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं जिससे कि हम इस डिजीज से बचा सके खुद को। ओके, सो जैसे कि व्हाट आर द प्रिकॉशन? यस सर। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में हम लोग जैसे कि हम लोग वैसे तो जो से योग है, प्राणायाम है, और जो एक्सरसाइज है, वी कैन अदर तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं, और सोशल वी मस्ट बी सोशल। ठीक है, तो हम सोशल भी होना जो है क्या है, वो ब्रेन को हेल्दी बनाता है। हम लोग लोगों से बात करें, लोगों से साथ में जो है ग्रुप एक्टिविटी है, तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेन। और फिर सम जो हर्ब्स हैं, वी कैन यूज दैट हर्ब्स। तो मेनली हमको लगता है कि योग और प्राणायाम या एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट if you want to make your brain healthy for longer time. थैंक यू सर। थैंक यू करुणा जी फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? No question. Okay. Sir, Then myself, yes, Chandni. myself, Archana Kumari. Varsha, कुमारी। okay. तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये डिजीज होता है, जैसे कि अभी लोग या फिर बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। तो सर ये भी एक कारण हो सकता है क्या, या फिर ये जेनेटिक ही होगा इसका कॉजेज? ऐसे तो इसका जो वी से दैट एसियोलॉजी है वो कैसे होता है, अभी इसके बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो सोशल मीडिया पे लंबे समय तक रहना या इंटरनेट ज़्यादा यूज करना, तो ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है।
तो इट फिर लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। थैंक यू सर। मुझे लगता है प्रश्न हो गए हैं सारे। एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है सर और है, कभी आज के जनरेशन में जैसे हम लोग हैं या हमारे अभी जो यंगर जनरेशन है, तो कई बार होता है क्या जैसे मतलब हम काफी के लिए दूध वगैरह के पीने किसी काम कर लेते हैं तो ऊपर का हमें ध्यान तो नहीं है। आवाज 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 क्लियर नहीं आ रही है आवाज सर। क्लियर नहीं आ रही है। 10 मिनट तक। सॉरी सर। यस सर। हेलो। हाँ जी ठीक है सर। ये हम ये कह रहे थे जैसे हम लोग आज के समय में जैसे दूध बॉयल कर रहे हैं चाय के लिए तो भूल गए, कोई दूसरा काम करने लगे। चश्मा कभी अपने सिर पे रख लेते हैं और ढूंढते हैं पूरे घर में कहाँ है। मोबाइल हाथ में रख करके सोचते हैं क्या ये भी सिम्टम अल्जाइमर में होता है या ऐसे ये नॉर्मल? नहीं, ये सर नॉर्मल चीज है सर, लेकिन जब आप वाकई में भूल रहे हैं ठीक है चीजों को, आप मान लीजिए आप रख के एकदम आप भूल जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू नोटिस दिस थिंग्स, देन इट मे बी अ सिम्पटम। लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर दैट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन से। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ऐसा होता है बेसिकली। Okay, thank you. Then, with the permission of today's online webinar, Dr. Rajnikant Pandey sir, with your permission, we would like to wind up the webinar, sir. तो प्रभात सर आप हैं यहाँ? तो मुझे लगता है सर अब इसको जो है कंक्लूड किया जा रहा है, तो पांडे सर आप परमिट करें, फिर प्रभात सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ, फिर प्रभात सर धन्यवाद ज्ञापन के बाद इसको। बिल्कुल शुक्ला सर, आप जी प्रभात जी सर बहुत सुंदर व्याख्यान और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, सार्वभौमिक और हम युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक एवं जानकारी युक्त था। इस अवसर पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र सर का बहुत ओजस्वी व्याख्यान हुआ। हम प्रयत्न परिवार एवं तमाम उपस्थित प्रतिभागियों की ओर से यह मोमेंटो आपको सादर समर्पित करते हैं। कृपया इसको ग्रहण करने की कृपा प्रदान करें। अब हम आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर रजनीकांत सर के प्रति हम आभार प्रकट करते हुए यह मोमेंटो हम प्रणाम सर आपको प्रदान करते हैं। कृपया ग्रहण करने की कृपा प्रदान करें। बिल्कुल सर। अब दोनों आदमी तक हम इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारे मुख्य वक्ता महोदय यहाँ उपस्थित हैं और आपको रजनीकांत पांडे सर तक भी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक सूचना, क्योंकि बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं, आप प्रमाण पत्र एवं आगामी कार्यक्रम के लिए हमने मैसेज बॉक्स में अपना नंबर लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप तमाम लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नाम के साथ हमारे मोबाइल पर मैसेज करेंगे तो आपका प्रमाण पत्र निश्चित रूप में चला जाएगा। हमारा वेबिनार का ग्रुप है, उसमें हम आपको जोड़ देंगे और प्रमाण पत्र वहां आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस कार्यक्रम सर आगे बढ़ाऊं क्या? जी अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्वेष आनंद जी से आग्रह करता हूं कि कृपया उपस्थित तमाम प्रतिभागी अतिथि को आप धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। अन्वेष आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए अन्वेष जी। जी sir. A very good evening to one and all present here in this webinar. On the behalf of Prayatna organization, I am glad to standing here to express vote of thanks.
I am Animesh Anand gives a special thanks to our chief guest, Mr. Ashutosh Misra, for accepting invitation for being with us for today. Thank you, sir, for giving a precious time to us on this topic for enlightening us Alzheimer disease. You really given the really informative session, and thank you for this, Ashutosh. After that, I would like to give thanks to our Rajnikant sir, who is our chairperson of today's webinar, who always support us and who also enlightened us on this topic. And at last, I want to thank our coordinator, Amar Bahadur Shukla sir, who is really a superstar of the today's session, because to organize the event in a mannered way is the really very important thing. So I would like to thank Amar Shukla sir, and I can say that he is the superstar event and organize this event in a mannered way. At last, I would like to thank Priyatan family, sorry, for organizing this free webinar so the students can get knowledge in free of cost. It is not a paid webinar; it is a really free webinar. So you can learn, you can come here, join us, and you can get some knowledge in free of cost. As all the participants joined here, I would suggest you to please join the next webinar, and I really confirm you that you will get some new knowledge after joining this webinar. Thank you, Pratham family, for organizing this webinar. And at last, thank you for all participants to joining us. Have a nice evening to all of you. Thank you. Over to you, Amar sir.